हमारे साथ हैं उम्मेहानी. Am I pronouncing the name right? Yes, ma'am. Ummehani, right? A Yes. student of Digital Gurukul batch, August 2022 evening batch, and we will interview her and know where she's coming from and how she ended up in Digital Gurukul and what made her decide to do digital marketing. So, tell us your age and your full name, Ummehani. Okay, so my name is Ummehani Fakhruddin and I'm 20 years old. Very young. Huh? Where are you born and brought up? Okay, I was born in India, Neemuch, if some people might know. It's in Madhya Pradesh, and then I was for like 10 years I was brought up in India, and then I shifted to Dubai. So rest 10 years till date I've been living in Dubai, and my studies from grade 3 to grade 12 I've studied in Dubai. I had taken a year off from schooling, and I had joined for Quran for learning Quran, for memorizing it, and I had gone to Nairobi. There is an institute which is called Mukhayyam. So I was there for 9-10 months, and I started my journey, but it's still in progress and process. And soon after completing the memorization, it is a person is called either Hafiz or Hafiza for a female. Okay. So soon I hope I will be a Hafiza. That's great. Have you pursued anything in your graduation or till now? No, I'm planning to pursue BBA and then MBA. But then I just got distracted with digital marketing because my cousins and everyone they suggested कि अभी अगर ग्रेजुएशन साथ में कर सकते हैं वैसे तो, पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई कोर्स कर ले हम लोग, कोई कोर्स कर लूँ मैं और फिर जॉब करके साथ जॉब के मैं ग्रेजुएशन करूँ तो वो भी चलेगा, वो भी सही है. तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, फिर मैंने बहुत टाइम सोचा कि मैं क्या करूँ. एंड देन बाय द वे आई एम एंगेज्ड, सो माय फियांसे he has been a student in Digital Gurukul. So I asked him and we had a conversation about it, and then he told me that I should pursue digital marketing, and then I can go in any of the fields in digital marketing like SEO, Google Ads, or anything, social media, content writing. So yeah, and then I ended up in Digital Gurukul. That's how I think that is the best part about digital marketing, that you don't have to learn the whole thing. You can just grab one segment and just go with it in your career. So tell us something about yourself, who you are as a girl, as a person. What is your personality like? Tell us about yourself. I'm a very, very sentimental and emotional person. मुझे अभी मतलब मैं इंडिया बहुत टाइम बाद आई हूँ, अभी 3-4 साल बाद आई हूँ. मतलब मैं आती हूँ लेकिन इतना टाइम मैं नहीं रुक पाती, 1 वीक 2 वीक, दैट्स इट. तो अभी जब मैं आई, और वैसे भी मुझे बहुत मतलब सिंपैथी कहते हैं ना, जिसके सिंपैथी मुझे बहुत आती है. यहाँ पे लोग मतलब बहुत सारे ऐसे है कि जिनको देख के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती वैसा. तो मुझे ये चीज है मेरे अंदर, और फिर मैं किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ. तो अगर मुझसे कोई 10 मिनट भी बात कर लेना तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टाइम से जानता है, क्योंकि मैं इतनी बातें करती हूँ ना. और मैं मतलब ऐसा लगता नहीं कि यार मैं कौन हूँ, वो कौन है, इट डजंट मैटर. मैं किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कितनी भी बातें कर सकती हूँ. तो एक ये चीज है, और मैं नर्वस बहुत हो जाती हूँ बहुत जल्दी. I can see that. Other than that, I love pets. I love pets.
cat हो जाता है, rabbits, fishes. Okay. So yeah, Super. yeah, that's it. Okay. So what made you choose digital marketing? When it clicked your mind that हाँ मुझे digital marketing करना है शायद, because you're very young, you're at a very crucial stage of your life, and as selecting a field usually बच्चे confused रहते हैं ना कि I was confused, even I was confused. I have done a lot of education and then I started and opted digital marketing from Digital Gurukul itself. So when did you decide it? It was, it just came naturally to me. Okay. That was, like, honestly, if I tell you, I was confused, but I was not confused for a lot of time, like, for a longer time. It was just a period of like a month or something. I just finished my 12th के exams, and then वही मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना है जहाँ पढ़ाई ना हो और क्रिएटिविटी जो मेरी है मेरे अंदर किसी भी फील्ड के लिए वो मैं निकाल सकूं. अभी ऐसा मेरे बारे में ऐसा है कि मैं अगर किसी भी चीज के लिए अगर मैं उसको पढ़ूं, उसको स्टडी करूं और वो है ना, तो फिर मुझे समझ में आ जाता है कि उसके नेक्स्ट में क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर मैं खुद की क्रिएटिविटी कितनी लगा सकती हूँ. और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हो. इट्स लाइक यू विन द वर्ल्ड इफ यू स्टडी इट प्रॉपरली. तो वही था. तो अब मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है, मैंने सोचा था फैशन डिजाइनिंग का भी, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी, पर अभी उसमें है ना मुझे लगा कि यार दिस इज लाइक भेड़ चाल हो जाएगा क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं और अब इसमें क्या बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई. अब मैं भी वही चीज करूंगी जो मेरे पास वाला कर सकता है. अभी डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज मुझे लगता है ऐसा है कि आपके पास वाला जो है ना वो अगर कुछ सोच रहा है और आप कुछ सोच रहे हो ना, आप दोनों का माइंड मिलके कुछ बहुत ही अच्छी चीज बना सकता है, कुछ बहुत ही यूनिक चीज बिल्ड कर सकता है. तो एक ऐसी चीज. और ये इसमें क्या कि आप टीम वर्क में कर सकते हो, टीम वर्क चाहिए इसके अंदर और टीम वर्क इज द बेस्ट. टीम वर्क करना. I think digital marketing gives you a huge scope. Yes, that's true. Do you have any prior work experience? No. कोई जॉब नहीं किया? नहीं. Okay, that's great. What was the one reason you told me that you got to know about Digital Gurukul from your fiance, right? He also was a student of Digital Gurukul. So what was the one thing he told you is the best in Digital Gurukul? He told me that everything is practical. You don't need to worry about कि सर क्या कर रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं. You can always use your own creativity and that was the thing I wanted. क्योंकि बहुत बार मतलब मैं स्कूलिंग में भी मेरी लाइफ में स्कूलिंग में भी ऐसा था कि मैं कभी कुछ खुद कर नहीं पाती थी क्योंकि टीचर को ऐसा चाहिए होता था कि जो मैं बता रही हूँ ना वही ऐसा ही करना है. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. वो एक्सपोजर नहीं था और मुझे वो एक्सपोजर चाहिए था. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये चीज. और जो डिजिटल गुरुकुल में है, मतलब मैंने बहुत रिसर्च की थी कि कोई बेटर इंस्टीट्यूट है या ऐसा कुछ. वहाँ पे भी यही चीज आई थी. डिजिटल गुरुकुल का भी आया था एंड जब मैंने उसके बारे में पढ़ा और थोड़े मैंने स्टूडेंट रिव्यूज भी पढ़े, मुझे समझ में आया कि हाँ ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जो मुझे मेरा ड्रीम अचीव करने में बहुत मदद करेगा और इट विल ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ मी. तो इसलिए. Okay, so what all topics you have completed in Digital Gurukul till now? Graphic designing. Okay. And now we've started website creation. Okay, anything till now you have done yourself and you felt like I'm so proud of myself, I've done this, I've learned this and did it myself? Yeah, ऐसे कुछ.
But well, you know what I say, which you count as your, what should I tell you? What you count as your success or something you have done yourself, you're proud about? Like after starting my journey with Digital Gurukul. Yes, in Digital Gurukul, you have completed graphic designing and you're into website creation right now, right? So उसमें क्या, जैसे I'll tell you what was वो the cut thing हो that गया gave था. me a lot of enthusiasm was when we were learning graphic designing. तो वो memes बनाने सिखाए थे सर ने. And it made me really proud. I used to show it to everyone. See, I made this. We watch it on, we just click it, like it on Instagram and everywhere. And see, I made it myself. So what is that thing you liked that you were very happy about to do? हाँ, और जब सर ने ये बताया था, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी बहुत सारी क्लासेस स्टार्टिंग की मिस हो गई थी ग्राफिक की. Okay. तो जब मैंने क्लास ली ना, तो वो था इंस्टाग्राम रील बनाना. तो जब सर बता रहे थे ना, सर ने प्रैक्टिकली बनवाया था रील, तो हम लोगों ने बनाया. और फिर जब इंडिविजुअली बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं एक सिंपल वे से स्टार्ट करूंगी, एक सिंपल रील से स्टार्ट करूंगी, और फिर उसमें थोड़ा एक और बनाऊंगी, 2-3 बनाऊंगी, तो उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी लाऊंगी. वन ऑफ माई रील इज प्रोसेस. तो वो जो रील मैंने बनाई ना, तो जो मैंने उसमें कलर सिलेक्शन किया, जो भी मैंने उसमें ट्रांजिशन किया, ये वो एक नई चीज थी मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार finally I can do it, and it's not a big deal. It's very easy, and you just need to know about it. I knew it. I got to know about it, and sir's guidance is amazing. Amazing. I seriously love how Like it is nothing. that is. He makes it look like कुछ नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है ना, ये इतना बड़ा बड़ा जो कर जाते हैं, it's not a big deal. Exactly my point. Okay, Exactly which my course you point. have opted? Sorry. Continue. Which course you have opted in Digital Gurukul? I've opted for Master's Diploma in Digital Marketing. And which batch? August batch. Okay, great. You have just started your whole journey. I really wish I'll interview you ahead, right? When you achieve something, when your course is completed. So what are your future plans? Once you are done with your digital marketing course, what are your future plans? What do you want to do? I've not decided yet, but I really wish something really great out of my journey, out of after getting out of this journey. जो डेस्टिनेशन है ना, I really feel कि वो बहुत beautiful होने वाला है, because I personally think I am putting a lot of effort. I am gonna put a lot of effort. So yes, I've not decided anything, but I think I might go in content writing. Amazing, I'll tell you. That is amazing. Okay, so can you share your experience with Raj sir and Digital Gurukul? Yes, I really like that sir. Oh my god, he's just amazing. He's more of a mentor and more of a friend. He's not even a teacher. I can't even tell him he's my master or obviously he's my master, but he's not a teacher kind of a teacher. He's just, I really prefer all the teachers to be like him, because he makes everything look very easy, and everything is actually easy after he is teaching it. After he has taught it, it just feels like, oh my god, this was so easy and I was so worried about it. There was nothing to be worried, aisa. I can totally accept. I have talked to a lot of students and this is a common thing. People have said कि सर पढ़ा जाते हो, पता भी नहीं चलता है बात में कि सर ने टॉपिक खत्म कर दिया है. So that is something very unique about Raj.
So we wish मुझे Ummehani बहुत that अच्छा लगा you. honestly. Sorry. मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ सर का experience. I know. It's just really good. I can understand. Yes, totally. So we wish Ummehani that you achieve what you are desiring somewhere in your heart, and we wish you all the strength that you would require to achieve your goals. Even if you want to work for a multinational company or start your own business, I will surely be going to stay connected with you. You have a very positive vibe. And from Raj sir and team Digital Gurukul, I wish you all the very best for your future. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It means a lot. And it was really nice talking to you. Same here. It was really nice talking to you. Thank you so much. Thank you, ma'am.